So let's begin. So today's lecture is on magic inside the dark room. So you have been aware about how the film is usually used. This is a film on your screen, and inside the film there is a negative. But we always think that how this film is converted into negative and then to positive. Although this is a little bit of history in photography, but it has its own magic. It has and chemist. It is a combination. Photography is a combination of physics, chemistry, uh, because you need to look at the lights and the appropriate angle to click the photograph. Chemistry because there is a lot of chemical reactions which happen while developing the film. So this is going to be all about chemistry in today's class. So if you want to understand the chemical reactions at work during processing of a film without going back to your school bench, then I just introduce everything to you from here. So this session actually tries to tell you that from a light sensitive black and white film, how do we obtain a negative which is no more light sensitive, because you can definitely take the negative outdoor. So how do we reach to that level that the light sensitive black and white film turns into a no more light sensitive and can be observed in broad daylight? So how all these things happen? There are three steps to it. First, exposure of the light sensitive emulsion followed by its processing. Second, the action of the developer agent, and third is the fixer agent, right? So I will present the essential procedures that cannot be omitted. Along these three major steps, a lot other intermediary processes of secondary importance can be carried out. But for the sake of your clarity, I will leave them out. And first, let us look at a typical photographic film cross section in the slide which I will just show you. This. So this is how your film looks like. This is how your film is, right? Um, Silver highlights, HALIDES, silver highlights make for the key component of emulsion. Without them, no light sensitivity. So the main thing which we need to understand and learn is with this name of silver highlights. So these crystals are actually scattered in a gelatin substratum, providing a buffered environment as well as stabilizing some chemical reactions. There's a very cozy place where we sort all these things. And light sensitive silver highlights used in film photography are usually made of chlorine and bromide. So you must have heard about these things. This is chlorine and bromide, and this is how the chemical reactions actually take place when we are dealing with it. So the silver bromide being used often, and this is one with the example there on your screen. This is how it looks like, and it's worth noting the bromide ions has a bigger volume than a silver ions. देखो आप इसमें देखो जो bromide ions हैं वो बड़े हैं और silver ions जो हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है? अब उससे क्या होता है? And more importantly, that real life crystals made of well ordered stacks of silver bromide pairs are not perfectly stacked. एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए नहीं होते हैं. They contain imperfections. It has cracks and shears, but also impurities made of some other foreign atoms or molecules.
So the importance of these imperfections is quite astounding, as they are key to the image forming process in film. Whatever imperfections, उसके अंदर impurities हैं, जो भी है इस सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर, उसकी वजह से ही एक्चुअली जो इमेजेस जो है वो बन के आती हैं. हमें इतना ही जानने की जरूरत है, क्या इम्प्योरिटीज है, क्या रिएक्शन होता है, हमें उसके अंदर जाने की खास जरूरत नहीं है. So the image appears on the light sensitive films in 3 steps. अब इस फिल्म के ऊपर वो इमेज कैसे आ जाती है? Let's see. First step. First, during the exposure, when the shutter opens up to let a certain quantity of light on photons go through, it's the moment when the latent image is being formed in the film emulsion. जैसे ही शटर खोला, लाइट की एंट्री हुई, तो आपने कौन सी इमेज बनाई? आपने अपनी फिल्म के ऊपर एक लेटेंट इमेज बनाई. देन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, व्हेन द लेटेंट इमेज इज एम्प्लीफाइड बाय द डेवलपिंग एजेंट, तब आपका डेवलपमेंट हो रहा है. थर्ड, लास्टली, दिस डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट इमेज इज फिक्स्ड. फिक्स क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि जैसे ही अगर आप फिक्सर में डाल के उसको फिक्स नहीं करेंगे, तो जैसे ही आप उसको लाइट पे लेके आएंगे, तो वो जो भी इमेज बनी होगी वो सारी डार्क हो जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी. सो लास्टली, द डेवलप्ड लेटेंट इमेज इज फिक्स्ड. It's the fixing process to become insensitive to light. It is the well-known negative obtained as a result of a film being entirely processed. उसके बाद जो भी आपके सामने आती है वो होती है एक योर नेगेटिव, जो भी नेगेटिव आप लोग यूज करते हो. Now let's see how the latent image is formed in this next slide. Right. तो लाइट फोटॉन्स आ रहे हैं, सिल्वर हाईलाइट है बीच में और ब्रोमाइड है. तो किस तरह से वो ट्रैवल कर रही है? So the first step of the latent image forming process is the exposure. जो शटर के खुलते ही हुआ एक्सपोजर मिला. It's the moment when photons of light, photons जो होते हैं ना लाइट के अंदर होते हैं, photons of light strikes the silver halide crystal, जो हमारी फिल्म के अंदर है. तो लाइट के फोटॉन्स आए, वो उस फिल्म के ऊपर पड़े. इन डूइंग सो इट किक्स आउट द सप्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द लार्जर ब्रोमाइडियम. सो उससे ब्रोमाइड जो है फिल्म के अंदर वो अपने रिएक्शंस दिखाने उसने शुरू कर दिए. And during the second phase of the latent image forming process, the kicked out electrons, which has too much energy to be captured by silver ions, goes on roam around the entire crystal. क्योंकि बीच में जगह है, impurities है, तो पूरे जगह में घूमते हैं. And so until being trapped by an imperfections, a local defect in crystal structure, or by impurity in the form of foreign atom or molecule. So, इस वजह से वो पूरे के पूरे इधर उधर घूम के वो जो भी खाली एम्प्टी स्पेसेस आपको दिखाई दे रही है वहां पे जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? तीसरा स्टेप ऑफ लेटेंट इमेज में वो आ जाते हैं, जस्ट दिस. और देखिए इस इमेज में और इस इमेज में फर्क है. द किक्ड आउट इलेक्ट्रॉन रोम्स द क्रिस्टल अंटिल बीइंग ट्रैप्ड इन एन इम्परफेक्शन. जो भी खाली जगह है, इम्परफेक्शन, इम्प्योरिटीज है, उसके बीच में वो रुक जाते हैं. और जब वो रुक गए तो यहाँ पे हम इस तरह से हो जाता है. ठीक है, आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होनी, आपकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं से फॉर्म होनी शुरू होने लग गई है. Then after several photons have stricken the crystal and kicked out electrons of the bromaidians, an accumulation of those electrons is created around this local imperfection or impurity. And the third step, this one, तीसरा स्टेप जो है इस वाले में क्या होता है? So in the third step, this local accumulation of electrons generate a
negative electric field that can attract together itself the positive silver ions को वो रिलीज करती है. नॉट वेल सेट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो नहीं घुस पाए उनको रिलीज कर देती है. और हर एक पॉजिटिव सिल्वर आयन, each positive silver ions combining with electron gives birth to metallic silver atom. तो जितने भी सिल्वर आयन्स हैं वहाँ पे वो कंबाइन हुए इलेक्ट्रॉनिक से और फिर उन्होंने मेटेलिक सिल्वर एटम को जन्म दिया. So we rapidly end up with a small gathering of metallic silver atoms which corresponds to a development seed. All crystals in the emulsion containing a development seed form together what is called the latent image. यही याद रखने की जरूरत है आपको, यही बात याद रखने की जरूरत है आपको. The latent image is made of all the development seeds. At macroscopic scale, this image is not sufficiently contrasted to be usable as the way it is at that moment. After all, there is very little difference between an exposed crystal that contains a development seed and an unexposed crystal that does not contain such a seed. So this is where the developer agent function. अभी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो उस इमेज में, तो यहाँ पे आपका डेवलपर एजेंट की एंट्री होती है. तो डेवलपर एजेंट जो है it amplifies the difference between exposed crystals and non-exposed crystals. लाइट आई, कुछ कुछ हुआ, क्रोमाइड, इन सब में अब कुछ तो एक्सपोज हो गए, कुछ जो क्रिस्टल्स थे वो एक्सपोज नहीं हुए. वो एक्सपोज क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके ऊपर उतने लाइट प्रोटॉन्स नहीं आए थे. अब जो एक्सपोज नहीं हुए हैं और एक्सपोज हुए हैं, दिख वो सब एक जैसे से ही रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है. तो अब हम डेवलपर एजेंट उसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे जो एक्सपोज है वो बिल्कुल अलग से निकल के उभर के आएंगे. सो these exposed crystals and non-exposed crystals को अलग अलग करने के लिए by transforming the entire exposed crystal into a metallic silver just from the seed presence. The development seeds acts as a catalyst of the transformation. इसका मतलब क्या है catalyst of transformation? कि उसने जो डेवलप थे और नहीं थे डेवलप, उनमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, तो डेवलपिंग एजेंट के अंदर हमने डाला जिससे उन दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिखाई देने लग गया, साफ साफ समझ में आने लग गया. देखिए यहाँ पे ये है, फिर इस इमेज में आया और फिर आपने मेटेलिक सिल्वर के अंदर डाला. पर अभी भी आप लोगों को जो नॉन साइंस किया उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, आ रहा होगा क्योंकि मैं भी खुद नॉन साइंस बैकग्राउंड से. पर अब मैं आपको अलग कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जिससे आपको मैं जो बताना चाह रही हूँ बात वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी. The thought that the developer agent acts only on silver halide crystal containing a development seed is only true during a certain time. ये वाली बात भी ध्यान रखनी. अब on the earth हम बात करते हैं. Let us take an example of this simple dark scene. एक लैम्प है डेस्क के ऊपर, एक डार्क रूम में है, ठीक है. सो वंस आपने फिल्म में एक्सपोज किया, द लेटेंट इमेज इज सिमिलर टू द इंस्ट्रक्शन. अभी दिखाती हूँ मैं आपको इलस्ट्रेशन, उसके हिसाब से किस तरह से इस लैम्प की इमेज फॉर्म होती है. आपके पास ये लैम्प है, आपको इसकी इमेज बनानी है. आपने इमेज खींची, लाइट अंदर गई, आपके इस तरह से आपकी लेटेंट इमेज दिखाई दे रही है. आपको इसमें लैम्प दिखाई दे रहा है? yes, पर अभी आप इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, थोड़ा ध्यान लगा के आपको दिख रहा है कि चलो भाई इस तरफ कहीं पे यहाँ पे लैम्प है, पर बाकी इलाका और इसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा. एक्सपोज और अनएक्सपोज में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है. इसके बाद डेवलपमेंट, इसके बाद हम कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे. Then the latent image is kind of intensified by a developer agent action.
एंड ऑल एक्सपोज्ड सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स, ये जितने भी ऊपर दिख रहे हैं आपको जो एक्सपोज है वो सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स हैं, will be entirely transformed into metallic silvers. So सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स जो है डेवलपिंग एजेंट पे डालने के बाद क्या हो गए, मेटेलिक सिल्वर बन गए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। The latent image is therefore revealed or developed, and its macroscopic density is now sufficient to be of some use. जब आपने वो डाल दिया उसके बाद डेवलपिंग एजेंट को डालने का तो आपको ऐसा दिखाई देने लगता है। Now you can easily see that the difference between lamp and the background. तो ये एक्सपोज इमेजेस जितनी भी थी वो बहुत क्लियरली अब हमको डेवलपिंग एजेंट के अंदर डालने के बाद दिखाई देने लग गई। Now we need to make the emulsion non-sensitive to light anymore, because we do not want कि हमने जो हमने बनाया है फिल्म को इस तरह से हम वो लाइट में लेकर जाएं और क्या हो जाए, वो दोबारा से सारा का सारा लाइट उस पे जाए और वो डार्क हो जाए। So now we need to make the emulsion non-sensitive to light. So what do we do? The metallic silver is already desensitized, but the silver highlight crystals. Actually प्रॉब्लम किस में है? ये तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है लैम्प वाला इलाका, ये तो हो चुका है, ये तो दिख रहा है हमको, पर ये वाला इलाका जो अभी एक्सपोज नहीं हुआ है हमें इसे प्रोटेक्ट करना है कि ये भी और ये एक्सपोज ना हो, कि ये एक्सपोज ना हो, हमें इस पे काम करना है। और इस पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको फिक्सर एजेंट में डालेंगे। पहले हमने किस में डाला था, डेवलपिंग एजेंट में डाला था। अब इस इमेज को फिक्स करने के लिए हम इसको फिक्सर एजेंट में डालेंगे। सो मेटेलिक सिल्वर इज ऑलरेडी desensitized, but the silver highlight crystals which were not exposed are still light sensitive. And the most obvious thing to do is to get rid of those. That is, flush them out of the emulsion. निकाल दो उनको। वो अगर होंगे ही नहीं आपके फिल्म के ऊपर तो वो एक्सपोज भी नहीं होंगे। Just flush them out of the emulsion. And how do you do that? This is the function of fixer agent. It dissolves the silver highlights into a solution. So आपने fixer में डाला, जितने भी आपके थे वो सारे सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स वो अब आपने हटा दिए उसके ऊपर से। By this mean now being soluble, they can be flushed out with the fixer agent. Fixer agent के अंदर आपने डाला और वो सारे के सारे फ्लश आउट हो गए। और फिक्सर एजेंट का केमिकल फॉर्मूला ये रहा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, किसी को समझ आ रहा है तो let them understand this is how it all works, right? So silver ions already reduced to metallic silver are not affected by the action of the fixer agent. जो already silver तो silver में convert हो चुके हैं, मेटेलिक सिल्वर में जो कन्वर्ट हो चुका है लैम्प का इमेज, उसको उस फिक्सर से कोई मतलब नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाकी के जितने भी हैं वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे। We are therefore only getting rid of the emulsion components that did not receive light. तो जिसने लाइट एक्सपोज की थी, रिसीव की थी, वो लैम्प का शेड वो तो वैसा का वैसा रहेगा, बाकी का फ्लश आउट हो जाएगा। The film base being transparent, emulsion parts having not received any light appear as transparent. So where there is no light, अगर आप उसको लाइट के पास देखोगे नेगेटिव को तो वो इलाका ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। Also because they are now devoid of unexposed silver highlight, which have been washed out. Whereas parts that did receive light are loaded with metallic silver, hence appearing opaque. Right? So this is the reason why the negative holds its name and gives a representation of a scene by transmitted light. And through this opaque parts matching the light parts of the scene, and through its transparent parts matching the dark parts of the scene,
the negative is actually a real photograph. We prefer to inverse it during the printing process for obvious common aesthetic reasons, but it just remains an act of preference. So the real photograph is there, which is on the negative. Or now later, with the help of this negative, we make several positive. We can make several other images based on this negative. And what we can observe that only the exposed parts are covered with metallic silver. These are some important things which you need to understand. कि जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं वो कौन से केमिकल से के रिएक्शंस बन चुके हैं, दैट इज अ मेटेलिक सिल्वर. But also that the unexposed part of the film have been thoroughly cleaned by the fixer and contain no more silver highlights. क्योंकि बात और जो कन्वर्टेड इमेज है वो सिल्वर हाईलाइट्स जो है वो अब मेटेलिक सिल्वर बन चुकी है, और वहां उसके में ना ही मेटेलिक सिल्वर है ना ही सिल्वर हाईलाइट्स है फिक्सिंग के बाद, तो बाकी का एरिया जो है वो पूरा का पूरा धुल के साफ हो चुका है. सो the negative processing happens in this way. So I hope आपको ये नेगेटिव लैब के अंदर, डार्क रूम के अंदर कैसे बनता है, ये प्रोसीजर समझ में आया है. समझ में आया किसी को या नहीं आया, किसी को भी समझ में आया? आ गया. तो फटाफट से मुझे बताओ कि सबसे कंफ्यूजन है मुझे, इससे पहले आपने दो जगह पे तीन तीन स्टेप्स मेंशन किए थे. Like when we started the slide, there were 3 steps. Then when we forwarded, there were again 3 steps, which moved from latent imaging to fixing process. So what were the earlier 3 steps for? The earlier 3 steps were formation of latent image. Like when you capture it from the environment onto the camera. Yes. कि आप latent image बनाने के, see वो initial 3 steps जो थे, so it was the image appears on the light sensitive film. वो light sensitive film में कैसे आपके पास आते हैं, ठीक है. एक तो आपने आप कैसे लेटेंट इमेज, डेवलपर एजेंट और फिक्सर एजेंट, ये ही तीनों स्टेप्स में आप जाएंगे. तो उसमें जो सबसे पहले मैंने आपको ये 3 स्टेप बताए थे. अच्छा, मैं अपनी अपनी वो शेयर करती हूँ दोबारा से स्लाइड, तब आपको समझ में आएगा. देखो, मैंने आपको पहले बताया कि 3 स्टेप होते हैं. Exposure to the light sensitive followed by its processing, which are developer and fixer. So this is the procedure of forming a latent image. Then you develop it and then you fix it. So ये 3 steps थे पहले. और ये आपको फिल्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका है, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने का आपको इसमें ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है. और उसके बाद ये आपको कैसे आपके इसके अंदर क्या आप पूछ रहे हो, वन कि लेटेंट इमेज किस तरह से बनी है, उसका स्टाइल है. तो ये लेटेंट इमेज कैसे बन रही है, दिस इज अबाउट लेटेंट इमेज, हाउ द लेटेंट इमेज इज मेड. और फिर हम उसको कैसे डेवलपिंग एजेंट में डालते हैं. तो फिर इस इमेज से ये इस इमेज में, फिर इस इमेज से इस इमेज में आ जाती है. और फिर हम फिक्सर में डाल के उसको फिक्स कर देते हैं. फाइनल आपके सामने इमेज आ जाती है. राइट. So anything else you would like to know?